PPT? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Sorry, sir, for keeping you away. Like, let's just wait few Okay. more minutes, then we'll Okay. start. Okay. Okay. Okay.
Okay, sir, thank you for your patience. We will start Okay. now. Wait. So, good evening, everyone. It's a pleasure to welcome all respected dignities, subject experts, academians, researchers, farmers, students, and participants who have joined us today for 2 days of 2-day national webinar on Padma Shri Dr. Subhash Palekar, Krishi reviving soil, sustaining life, and securing the future. I am Rajeshwari Singh, and it's my privilege to be the host for today's session. I extend a very warm welcome to each one of you who has taken this time to be the part of this important national dialogue on sustainable agriculture. This webinar is being organized by Raja Bhoj College of Agriculture, Bagalghat JNKVV, Jabalpur, Madhya Pradesh, in collaboration with EcoFast Agri Solution. EcoFast Agri Solution is actively working towards bridging the gap between academic knowledge, field level practices, and sustainable agri entrepreneurship with a strong focus on natural farming. The purpose of this webinar is to strengthen awareness and understanding of natural farming system, revive soil health, reduce dependence on external input, and promote sustainable, eco-friendly agriculture practices that ensure long-term farmers' welfare. So, dear participants, today marks the second day and concluding day for this session. And now, it's my privilege to introduce our keynote speaker for day 2, Professor Dr. R. Raman, who is presently served as the director of the Center of Natural Farming and Sustainable Agriculture at Annamalai University, Tamil Nadu. Dr. Raman is a renowned academician and researcher with significant contribution in the area of natural and organic farming, climate change studies, and post-harvest technology. He has actively shared his research findings at numerous national and international conferences as keynote and invited speaker, and has also contributed as chairman and convener of scientific sessions. His excellence in research and academic service has been recognized through several prestigious awards, including the National Young and Deserving Wheat Scientist Award, the United Nations University Fellowship, and the Best Oral Presentation Award at an international conference held in China. Sir, your commended to advancing sustainable agriculture through scientific research is truly commendable. We are honored to have you with us today, sir. You may proceed, sir. Thank you, Dr. Rajeshwari, for the nice introduction. Good evening to everyone. It's my pleasure to give a talk on natural inputs, geomet, bijomet, and organic amendments. First of all, I would like to congratulate the organizers, especially the EcoFast Agriculture Solution and the Department of Agronomy, Raja Bhoj College of Agriculture, Bagalkot, Jabalpur, Madhya Pradesh, for choosing an excellent topic for this 2 days national webinar on Padma Shri Dr. Subhash Palekar, Krishi reviving soil, sustaining life, and securing the future.
We all know that agriculture is the oldest organized occupation in the world. It is the oldest as human civilizations when the human being started utilizing land for his or her survival and sustainability. Even today, in most of the developing countries, agriculture sector is a dominant sector source of employment and livelihoods. The importance of agriculture in the national GDP and the employment depends very much upon the level of economic development in the country. And in 1960 onwards, so we introduced the green revolutions. Before that, we had a famine. People are so starving for the food and all that. Import the grains from the other countries. Then the government they started the green revolution to increase the productivity. When we introduced the green revolutions, most of the green revolution rely on chemical-based inputs. Though our scientists given a very specific recommendation of fertilizer for crops and pesticides, weedicide for the crops. But out of interest, farmers they apply little bit more quantity also. That is the reasons the soil degradation happens here. We all know that soil is a base for agriculture. Without soil, we can't do any agriculture. But we can do agriculture with hydroponics, but only in the limited conditions, limited area, we can go for that. But when we have this type of soil degradations, the first one is a soil organic carbon. Before generations, the percentage of soil organic carbon was 0.8. And we know that soil organic carbon is vital for healthy soil, acting as a nutrient reservoir, improving the soil structure, and improving the water retention capacity. That is also enhance the soil erosion, and the organic carbon that's a feeding for microbes and sequestering atmospheric carbon, leading to more resilient and fertile soil that boost the crop productivity and fight the climate change by the reducing runoff and holding the moisture. It also improves the nutrient availability like NPK and enhance the water holding capacity, increase the microbial activity, stabilize the soil aggregates. But what happened all this before that we had a point 0.8. After this later on post green revolutions, so our soil organic carbon content is around 0.4 percentage. And before that we had a saline land of 1.5 million hectares only. After the continuous application of more amount of chemicals continuous in the field, that leads to now our land is having 6.7 million hectares are comes under saline conditions. And before that, we had during the green revolution, before the green revolution or the pre-green revolution period, waterlogged areas in the country was around 0.5 million hectares. Now, the waterlogged areas after the post-green revolutions, it is around 8 million hectares. An erosion risk previous to the green revolution was only 10%, and the post-green revolutions, the erosion risk is around 68%. Coming to the revival comparison, just compare with the green revolution and the natural inputs. So when you go for the nutrient sources, especially when we adapt this green revolution or the modern farming system, we had used only the synthetic chemicals for all crop needs. But in natural inputs, the main components of which whatever means we supply, that provide only the microbes, which fix around 25 to 50 kg of nitrogen per hectare. And soil pH was around 1+1, that leads to salinizations. But due to these natural inputs, when we apply more quantity of natural inputs, that is indirectly reduce the soil pH by minus 0.6. That means that make the soil neutralized condition also. And the most important one is whenever we develop a technology, we are very particular about the increase the yield of the crops also.
especially in the long-term yield. So any chemical gives the immediate result. Even if you take our own human beings, if you're having a headache, if you take a tablet within 1 hour, 2 hours, you will be free from headache. But in a long run, it has its own side effect also. So like that in agriculture also, the yield long term is decline as in the case of green revolutions. But whereas if you take in the case of natural input, when you use the natural input in the natural farming system, in the yield is increased, stabilized, and also now we are getting good yield also. When you use the natural inputs continuously, yield increase is around 15 to 30%, and the cost per acre is reduced. So as in the case of some crops, we are seeing that 20,000. But whereas when you use the natural inputs, we are getting slight mistake in the cost, 20,000. When you use the natural inputs, we spend only 2,000. That means 1/10 of the amount is used for cost of cultivation for the crops. So what is the need for the natural inputs? So after the green revolution, what happened? The people are we just dumped the chemicals. Any excessive chemical fertilizers used deplete the beneficial soil microbes, leading to erosion, salinity, yield stagnation globally. Over the 120 million hectares of the land in the India are degraded, threatening long-term food security. When the land has become degraded, we cannot use these land for agricultural operations. Many places already we have issues like climate change and other issues, and desertification, other issues. These leads to a lot of issues for the people, and especially now if the situation continues like that, we will have issues in the food security also. So that is the reasons natural input. When you use a natural input, that we can inbuild the soil web food webs also. The concept of this particular natural farming is rebuilt and rehabilitate and restore the soil bed. That is the concept. When I use the natural inputs that rebuild the soil food webs, enhance the nutrient cycling, and reduce the cost of protection by 50 to 60% in long term, not initially. Improved actually when we use these natural inputs, that improved the climate resilience to the greater extent, enabling the crops to tolerate the drought and heat source stress. Especially in Tamil Nadu, we have noticed that when we use this natural inputs for agriculture, now we are life is like a cycle. So in the early days, we use only the chemical for the natural based input for agriculture, and we slowly change to the modern agriculture by using of more amount of chemicals and all that. Again, we go back to the old systems. That's what we used to say, that it is a cycle. So the top is coming to the bottom coming to the top again. So again, we have to use only the natural based input for agriculture. And when you use these natural inputs, we can stabilize the yield by 20 to 30% increase yield, and it is totally this produce which we get natural farming system by using this natural input. We are taking only the residue free produce. The recent days you might have heard about, in many food produce we have residues. That is the reasons we are having a lot of issues in all age group. People are suffered due to these chemical residues. Supporting the human health and export standards are, especially India is one of the major exporter for organic or natural based produce to the external world. We are top in the world by providing the excellent organic food produce to the other countries also. And this particularly when you use this type of natural imports, it's aligned with the United Nations Sustainable Development Goals, especially to zero hunger and the climate actions. These things we can attain by using these natural inputs. The advantage of natural inputs. First one is soil microbes. Here the soil microbes are actually the bacteria, fungi, etc. are vital for the soil health, acting the nature's recycle by breaking down the organic matter and cycling the nutrient like nitrogen, phosphorus, and carbon for plants. They also improve the soil structure by
binding the particles, enhance the water retention capacity, and form the beneficial symbiotic relationship with the plant roots, aiding the nutrient absorptions and protecting the against the disease, making the soil fertile and productive. And coming to the organic, already I have mentioned, by using these particular natural inputs, it increases the soil microbes by 10 to 100x. And the organic carbon is already I have mentioned zero point 0.4 to zero point 0.5. Now, when you use the natural inputs, we can raise the organic carbon up to 0.7%. Cost of cultivation is reduced by because it is totally whatever is available in a farm. We use the actually we are recommend the people to go for the recycling process. Whatever is available with us, that should be converted as a wealth. Waste is converted as a wealth. By that, we can reduce the input cost by 50 to 70%. And the yield stability, that is actually when we introduce this natural farming, immediately we get lesser yield. But after some years, like 2 or 3 years, we used to say that 3 years is a conversion period for converting this already available farming to natural farming or organic farming. Definitely we have to wait for some times. So after some third year or fourth year, we can ensure the yield by 20 to 30% increase under the yield stability under the stress condition also. And when we use in inputs, it improves the soil permeability and drainage, and overall soil health is improved by using these natural inputs. What happened in early days before this during the green revolutions periods? So for last 5 to 10 years, we observed that most of the soils are become sterile condition. That means the soil is not able to produce the crops also. So then they coming to the environmental impact by using these natural inputs. The carbon sequestration, actually we are getting around the environmental impact 1 to 2 tons per hectare we get. Here we are going to discuss about the Jivamar, Bijamar, and organic environments. These three things are essential in agriculture, especially when you take this organic natural farming. We are especially the SUBHASH Palekar has mentioned about all this Jivamar, Bijamar. He is a father of Jivamar and Bijamar. And apart from that, we are also recommending the people to go for organic amendments to overcome the issues. It does not only increase the yield, not only increase the soil quality, it is also increase the food produce quality. The grains and the whatever the crops we grow, that quality is improved by using all these natural inputs, which is more relevant to the human health and animal health. We used to mention the Jivamar, the elixir of life, and it's Jivamar is a backbone of the natural farming. Think of it's a living microbial tonic for soil and quietly power plant health. Yeah, it's actually we used to say that it boosts the beneficial microbes. Actually, when we use the Jivamar, it multiplies the native bacteria, fungi, actinomyces that drive the nutrient cycling to the greater extent. When you use this type of Jivamar, that improves the soil fertility, biological, not chemical. Actually, there is no chemical is used. That is what we mentioned. The biological soil fertility is increased. Nutrient already present is become in the soil become more available to the plants, and it enhances soil structures. Microbial secretion help form the soil aggregates, better aeration and better root penetration in the soils, increases organic matter decomposition. It converts the crop residues into the usable plant materials. And the one of the main aspect in the natural farming are in the soils, earthworms. When you use this type of Jivamar, it activates the earthworms and soil fauna. A lively soil food web is improved in long-term fertility. And when we use this type of Jivamar, so it reduces depends on chemicals because we gradually soil restore self-sustaining capacity. So this is actually a Jivamar is a fermented cow-based bio input developed by Padma Shri, Dr. Subhash Palekar. It is a core component zero budget natural farming. Already it is known to everyone. It is a revive the biological soil and using the indigenous microorganisms.
So the dead soil we can improve the dead soil by using this Jivamardam. So we can, it is available in the two forms. One is a liquid form, that is the Jivamardam, and another one is a solid form. The liquid form is quick in action, whereas the solid form is slow in actions, that is Gan Jivamardam. Jivamad, actually, its origin of the Jivamad hormones, the native soil microflora from the Desi cow products, which is act as a microbial catalyst, not as a fertilizer. Unlike the chemical fertilizer, it activates soil biology rather than feeding the plants directly. Enhance the natural nutrient cycle. Already I mentioned all these things. Preparation is known to many people. The components which are required for this, ingredients are required for this preparation of Jivamart is desi cow dung, cow urine, jaggery, pulse flour, and form or the one soil, handful, water. So these are some of the preparation. It is known to many people. I don't want to discuss again. The role of geomet and soil health, actually the microbes which plays a major role on soil health. So when we use this geomet, it rapid multiplication of beneficial organism, soil organisms, improve the soil organic carbon. Already mentioned about the soil importance of soil organic carbon, and it is also neutralize the soil pH to the greater extent, and it make the soil in neutralized condition also. It enhance the nitrogen, natural nitrogen fixations. That is very important, and it is also improve the soil structure and fertility. Impact of soil parameters. So here we use three parameters we are given. Two parameters. One is the chemical based fertilizer. Another one is the after the post after the Jivamrit applications. What we get that they have given microbial count. Just imagine the microbial count. So the improvement is we get if you use the Jivamrit continuously, we can get 100x. So the organic carbon content is also in percentage is also increased. Previously it was 4.4 to 0.65. By application of this Jivamar, the soil organic carbon is increased from 0.69 to 0.75. So there is a chance for again we may get extra 0.05 to 0.1 extra. And see the pH was around 7.8 to 8.5 before that. After the Jivamar applications, the pH level is decreased by 7.2 to 7.5, and nitrogen fixation that is also increased through the natural way. Some of the soil health mechanism of the Jivamar. So organic carbon substrates are there, increase the microbial populations, earthworm activities increase by 4x, reduces EC and the balance of pH, supply the live microbes. And when we use the importance of the Jivamard on the plants, better nutrient uptake, microbes solubilize the phosphorus and fix the nitrogen and mobilize the micronutrients. That is a major issues when we use these chemical fertilizers. So these things will overcome by using the Jivamardhan plants, and stronger root system by healthy soil biology encourage deeper and more extensive root and improved plant vigor when we use this Jivamard, which enhance the enzyme and hormone activities like IAA and GA like effects. And when we use this type of Jivamard, which is relevant to high stress tolerance, plan cope the better with the drought, heat, and minor pest attacks. And finally, I already mentioned that yield stability. We not only increase the yield but also improve the quality parameters like taste, aroma, and shelf life. These are the major issues because I tried in my own farm. So when we use the chemical fertilizer, we didn't get the taste also. After we changing the using this chemical natural based input for the agriculture, what happened actually the taste was so nice, and we can keep it for extra days also. And the one line, I want to say that one line effect of Jivamar is the Jivamata does not feed the plant directly.
It feeds the soil and the soil feeds the plant. These are some of the physiological and biological improvement, formation of humus precursors, and improve the soil porosity by 15%, enhance the water quality capacity by 25%, encourage the internal nutrient cycling, and the nitrogen fixation by 25 to 50%, 50 kg per hectare, and phosphorus solubilized by using this Jivamard. Already mentioned the role of Jivamard in plants, promote the vigorous vegetative growth because it contains a lot of microbes. The microbes play a major role in plant system, improve the flowering and reproductive rates, and enhance the nutrient use efficiency because we are using lesser amount of nutrients. That efficiency will be improved by using this Jivamard and improve the stress tolerance, especially drought and heat, and ensure the yield stability. These things are essential when we go for using this Jivamard. And the next one is the Bijamard. Bijamard means seed nectar. And the Bijamard is it's a biopriming agent used with the in zero budget farming and rooted in ancient Vriksha Ayurveda principle. There is one actually for human being we used to say that Ayurveda means but using of only the plant material for treating the issues, health issues. But the Vriksha Ayurveda is nothing but the Ayurveda for plants. It is rooted in ancient Vriksha Ayurveda principles developed by the Subhash Palekar along with the Jivamar. Protect the seeds from soil and seed-borne pathogens. So you know the at the time of sowing, many farmers are not able to identify the pathogens with the available in the soil, either in soil or the seeds. That should be protected when you use treated seeds with the Bijamar. It activates the soil biology at the time of sowing also. Bijamar actually it's like a paste like it's a paste seed treatment materials prepared using the Desi cow products and local soil, and it forms a biological protective coating on the seed. It enhances the early seed microbe interactions, prevent the disease without chemical fungicide. You know, the early days, before this natural farming practice, which we use the recent days, before that, we use a lot of fungicides. Sometimes the seeds may be used as a produce. That time we had issues also. So here, when you use this Bijamar, it is totally free from chemical fungicides. Coming to the preparation methods, again, the desi cow urine, lime, local farm soil, salt, and water. And the preparation method, it is known to many people. I don't want to again repeat that one. Role of soil, Bijamard and soil health. Coming to the Bijamard, actually Bijamard, they enhance the germination percentage on early vigor, and it is introduced as a PGPR. It includes the IAA producing bacteria and actinomyces and enhance the root exudations, feeding the soil microbes. Because the material which is available in the Bijamard, which is used as a feeding material for the soil microbes. And when you use this type of materials, you can indirectly boost the microbial population near the root zone of the crop. And moreover, when you use the Bijamard, that suppress the soil-borne disease in the crop areas. Benefits on soil health. Coming to the benefits, early activation of the soil food web, and it was the in the soil we have so many organisms are available. So we have a lot of microbes are available, small like earthworms are available. So we can when you use these materials, soil health is improved by early activation of the soil food web and improve this phosphorus solubilization. You know the problem with the phosphorus, phosphorus not that much solubilized in the normal conditions. When you use this type of materials that improve the microbial activity, indirectly that improve this phosphorus solubilization in a greater way also. We can reduce the need of external fertilizers because the nutrient which is available with the Bijamard, that's Jivamard, is enough for the crops, and it prevents the soil compaction and
young seedling age, and it improves the root and soil contact to the great extent also. Coming to the Bijamrit, how it improves the germination, early growth. The role of Bijamrit in plants. Coming to the role of the Bijamrit work through the biological and biochemical mechanism at the soil seed interface. It does not force the growth. It creates the right micro environment for the seed to perform as a genetically potential. And the Bijamrit promote the strong root and the shoot growth. The reason is the Bijamrit strengthen the both below the ground, especially roots, and above the ground like shoots growth by shaping the early biological and nutritional environment of the seedlings. And Bijamrit actually promote the strong root and shoot growth by microbial production of growth regulator, improve the nutrient mobilizations, enhance root architecture, and protection of the rhizosphere during the early crop establishments. And it is also improve the stress tolerance in early stages of crops. The on early stage we have to provide all the essential input for the crops like the water and other things. But when there is a stress in that time, the early growth stages are the most fragile stage for the crops. We have to give more care in the early stage. When you use the Bijamur, it strengthens the seedlings by biologically priming them to withstand the environmental and biotic stress. It improves the early stage stress tolerance by inducing the systemic resistance and enhancing the antioxidant defense mechanism, improving the root mediated water uptake, and stabilizing the rhizosphere environment. And it ensures the better crop stand. The crop establishment depends upon the uniform germinations. When you use this type of geomet, we can get uniform germination. Sometimes the germination is maybe delayed in normal conditions. When you use a Bijamrit, we can ensure the uniform germination and early vigor, root health, and survival under the field conditions. Bijamrit support all the biological sequentially. Bijamrit ensure the better crop stand establishment by enhanced germination, protecting the seedlings, and promoting the early root development and stabilizing the rhizosphere for uniform and stress release. Here, the synergetic effect of we are recommending both the Jivamrit and Bijamrit for the natural farming. So when we use this type of both the things, so before this, we have three tables. One is the parameters. Second one is only the baseline. Is nothing but we use only the chemical-based fertilizers. And third one is post Jivamrit and Bijamrit. Here the microbes are 10 to the power 6 in as in the soil. But whereas in the post Jivamrit and the Bijamrit applied field, we get 10 to the power of 8 and we get 100x gain. And the organic carbon content is also increased. pH also stabilized. Already we have mentioned the individually, but when you combine the Jivamrit and Bijamrit, synergistic effect, we get the synergistic effect. And earthworm population also increased by 4x. And coming to this synergetic effect, when the Bijamrit and Jivamrit are used together, they act as a continuum of biological support from seed to seedling, soil to crops. Their combined effect is greater than using the either alone. Bijamrit promotes, protects, and primes the seeds, while the Jivamrit sustains and amplifies the soil biology together, ensuring robust crop establishment, sustained productivity. Here, the soil amendments are essential, especially because the soil become the sterile conditions. So by using of continuous chemical and all that, chemical fertilizers, and moreover, the recent is started last 20 to 30 years, we have witnessed most of the soils are having the micronutrient deficiency. That is due to we are totally forgetting to apply the natural based inputs. In all the natural based inputs, either it may be a cow dung or any other materials, it contains all the nutrients in appropriate quantities.
Whereas if you use urea, the urea provide only nitrogen. That is the reasons we have to go for organic amendments. Here the organic amendments are decomposed either plant or the animal materials, or sometimes it is a combination of plant and animal materials. Example like FIM, farmyard manure, vermicompost, green manure, gun jivamar in zero budget natural farming. They provide slow release of carbon by 2 to 5%. Act as a long-term food for microbes introduced by the Jivamar. Unlike liquid inputs, they offer sustained soil. And the organic amendments improve the soil health by enhancing the soil structure, stimulating the when we apply these organic amendments, the microbial activities are improving the nutrient cycling, increasing the resilience against the biotic and abiotic stress by application of organic amendments in the fields. The organic amendments are actually material which we get from the only either already mentioned the either from the plant or animal origin that should be applied to the field. When you use this organic amendments, soil physical properties are improved, like soil color is improved, soil water holding capacity is improved, soil bulk density is improved, particle density is improved, chemical the properties are improved, and the biological health is also improved. We get more quantity of microbes and better vermicompost population in the fields. It supplies the bulk organic matter to rebuild the degraded soil. Okay, already soil become degraded conditions. Now we have to rebuild or rehabilitate or restore the soil by application of the bulky organic matter. So we can use the both the either we may go for a concentrated organic matter content or the bulky organic matter content. The any organic either it may be a bulky or the concentrated that rebuild the degraded soil to the great extent. It is support the continuum microbial activity essential for long-term sustainability under the natural farming system. Some of the organic amendments, so we are recommending the people to go for a gun jivamar. It is a solid form of jivamar, and farmyard manure or compost or vermicompost. And we can also include the green manures, legumes like cowpea, sesbania. These are some of the organic amendments are used to enhance the soil conditions, to improve the soil fertility. For that we are using all these things. So here we are recommending the application of organic amendments, and the prepared 100 kg of cow dung, the dry farm, apply to the field at the rate of Kanajivaman from the Kanajivaman. We can apply 200 to 500 kg per acre. As in the case of farming, we are recommending the people to go for a farming ammonia at the rate of 12.5 tons per hectare. But here the farming ammonia they are composed. We just applied. We recommend the people to go for 5 to 10 tons per acre annually. And when you go for a green manure, so at the time of during the vegetative stage of the crops, or the at the time of 50% flowering, we ask the people to add this green manure to the field. We ask the people to incorporate the green manures in the fields. That fixes the atmospheric nitrogen to the greatest of 40 to 60%. That is a natural form of nitrogen. The role of organic amendments in soil health, it improves the soil structure and fertility, it enhance the water retention and the nutrient cycling, reduce the dependence of chemical fertilizers, because before that we just dumped the chemicals. Initially our farmers were not interested to apply chemicals, slowly they changed. Now what happened? Now we get to replace the chemical fertilizers by adding this organic matter content and restore the long-term soil productivity. The physical improvement when you apply continuously, the physical properties of soils are enhanced by increased soil locations. Porosity is improved by 15 to 20%, and water holding capacity increased by 25%. The problem is actually water holding is a water logged soils are more issues in the recent days. But when you go for this type of soil amendments, water holding capacity is improved or increased by 25%.
and better aeration and root penetrations are enhanced by addition of this, particularly the organic amendments. The chemical fertilizers, chemical benefits of the actually, we have when you use the chemical fertilizers that totally change the soil pH, EC, and everything is totally changed. But the chemical benefits due to the application of this, particularly the soil organic amendments, it maintains the soil pH between 7.2 to 7.5, reduce the EC through the ion exchange. Then they supply the slow release of NPK and micronutrients, and the macronutrients deficiency are very common, that will be overcome by addition of the soil amendments in the recent days. What happened, the soil, the micronutrients may limit the productivity to the great extent, and not only that, the particularly the uh, micronutrient deficiency may leads to limiting the uptake of macronutrients also, and chelated toxic metals via organic acids reverse the degradation from the chemical use. And coming to the biological activations, and the bulk carbon feeds the geomet introduced microbes, and the microbial population increased by 10x, and that is essential because soil should have more of organisms. That is always good for the healthy soil, means that soil should contain more amount of uh, organisms in the soil. Earthworm activities increased by 4x, formation of stable humus and suppression of soil-borne pathogens when you use this type of things. Coming to the quantitative soil health impact due to the addition of this, particularly the organic amendments, the organic carbon content is increased by the gain is by 0.2 to 0.44, and water retention capacity is increased by with the addition of the amendments, we can increase by 25%. What happened, that leads to that crop may resistant to the drought also. Then microbial diversity, it is also better increased by 2 to 5x higher, and the gain is actually better cycling due to these microbes which is available in the soils. Bulk densities also improved, that improve the tilth of the soil condition to the great extent. And early before this application of the amendments, it was more than 1.5. After the application of the amendments, it was between 1.2 to 1.3. That leads to improved tilth. That's the gain we get from the soil application of soil amendments. And coming to the role of organic amendments in the plants, here we have given a lot of organic amendments we have given. So it has increased the leaching of sodium ion, membrane integrity increased, thermal pressures increased, osmotic adjustment is there, and enhance the soil enlargement. We have so many advantages role played by the organic amendments. It is improved the nutrient supply in the uptake. That's very important. And the when you add the soil organic amendments in the field, that enhance the soil plant to enhance the root proliferations. That plant may the root may enter very deep also, increase the yield of the crops, and the we can get the high quality produce. And the by addition of the organic amendments, we can get the then diseases are suppressed by addition of the, particularly the organic amendments. Triple synergy metric here. Actually, when you use only the liquid like whatever we mentioned, like either Bijamard and Jivamard. So soil organic carbon is increased by plus 0.05. When you use the amendments, that is increased by 0.1%. But when you use all these trio components, the full effect of the particular trio components, we get around 0.15% per season. That's just imagine per season, we are getting 0.15% increase. And microbial populations is increased, as in the case of only use it liquid, we get 10x, 100x. When you use only amendments, we get only 2 to 5x only. But when you use a combination of all this, either they are both the liquid and the amendments, we can get 1000x diversity. And the yield gain was around 20%, 20 to 30%, as in the case of liquid only.
And whereas if you use only the amendments, we can get only 15 to 20%. When you use this trio, all the liquid as well as the amendments, we can get 35 to 50%. And water use efficiency increased by liquid biostimulant, that's around 20% water use efficiency, because the water use efficiency plays major role in crop growth also. So here when you use the amendments, that is little than percentage. When you use combination of both things, it is around the 35%. Nutrient recycling is also complete internal loop, as in the case of when you use these three components in a greater ways also. So the coming to the conclusion part, Geomet, Bijamet, and organic amendments provide a holistic solution for restoring a degraded soil. Their synergetic action revives the microbial life and rebuild the soil structure to the great extent, and ensure 30 to 50% extra higher than the chemical farming, reduce the cost of cultivation up to the maximum level of 70%, not in the all for all the conditions. So if you are having all the facilities, if you have the farm waste and the other things, we can reduce the cost of cultivation by 70%, and it is also supporting the sustainable agriculture. So here we are very particular. So the Jivamad, Bijamad, and the organic amendments play a major role. It does not only increase the yield of the crop, basically it improves the soil health. And the soil organisms are improved. Number of organisms are improved by addition of all these things. That leads to, when you make the soil healthy conditions, that make the healthy crops also, and that make the environment very healthy. All come from the soil. So all the soil health is based upon what we give. So whatever we always saying that the output is based upon the input. Here, when you give an excellent input, we get the best output. When you use a natural based input for the agriculture operations, what we get? We get a good soil, healthy soils, healthy food, healthy environment, and the human health is also improved. Animal health is also improved. We can lower the medical expenses by addition of this organic or natural inputs for agriculture. And with this, I conclude my talk. Now I interested to discuss with you. If you have any queries, I'm ready to answer for your queries. Thank you, sir. Thank you, sir, for your session. Anyone have any queries so they can ask? Doesn't seem like anyone have any queries. That means they are well versed with this topic. Okay. Participants, this is your chance to ask questions. So there is the one question by Sanjeev Kumar. Okay. How can increase the tea crop yields? Which crop? Tea crop. Tea crop. They're asking. A tea crop is not a annual crop, it is a perennial crop. Perennial crop means we had to wait for some more time also. We should totally stop the application of the chemical-based inputs to the field. But we can improve all this yield and quality. That's very important. Here in tea, we are very particular about the quality.
India stands best in the world, and there is a lot of demand for Indian organic tea in international market also. A lot of people are earning huge amount of money by supplying the organic tea to the external world also. And when you use this type of organic inputs or natural inputs, it may take little bit more time because already we have dumped more chemicals. We can slowly withdraw the chemical by addition of organic matter or the natural inputs to the field. So in long term, it may take another 1 or 2 years. Then only we get the good yield with the good quality also. Okay, sir. So, thank you very much, sir, for your insightful and enriching address. Your presentation has provided valuable scientific clarity on natural and organic farming practices and highlighted their importance in restoring soil health, addressing climate change, and ensuring sustainable agriculture development. We sincerely appreciate your time and guidance. Thank you, sir. Thank you for the opportunity to share my views with you. Thank you. Okay, sir. So, Okay. now we will move to the next keynote session. It gave me great pleasure to introduce Shri Ashok Meena, a committed natural farmer who has been practicing Padma Shri Dr. Subhash Palekar Krishi for several years. He has been continuously working with farmers, guiding them in adopting natural farming practices, and has successfully established the Palekar Food Forest 5-layer model, which showcases the practical implementation of biodiversity-based farming system. Sir, we are delighted to have you with us today. We now request you to share your experience and practical insight with participants. Hello, sir. Krishi. Ashok, sir, are you there? अशोक सर आप यहाँ हैं? जी अशोक सर। जी जी सर, कंटिन्यू करेंगे अब आप। जी जी हेलो यस सर। जी बोलना स्टार्ट करें। जी सर, बिल्कुल। जी जी अ, जो भी हमारे अन्नदाता जुड़े हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। और मैं हमारे गुरु सुभाष पालेकर जी का शिष्य हूँ और मैं उन शिष्यों में से हूँ जो 5-6 देशों में उनके 65 लाख से भी अधिक प्रत्यक्ष उनके सुभाष पालेकर कृषि करते हैं। मेरा 14 और 15 साल का जो अनुभव है
मैं उसको शेयर करूँगा। और जैसा कि पिछले वर्षों मैंने गेहूँ, विशेष बंसी गेहूँ 14-15 साल से मैं लगाता आ रहा हूँ। और अभी 1 डेढ़ साल से मैंने फूड बागवानी पंचस्तरीय, जो उनका पालेकर गुरुजी का कांसेप्ट है, उसको मैंने 1.5 साल में बड़ी गहनता से, बहुत बारीकी से तैयार किया है। और उसमें मैंने 3 मॉडल बनाए हैं। प्रथम हमारा 1 एकड़ का है, करीबन 40-45 हज़ार स्क्वायर फीट का। एक 8,100 स्क्वायर फीट का है, और एक और है छोटा 2750 स्क्वायर फीट का। तो फूड पौधे की मैं इनमें तीनों में संख्या बताता हूँ कि जो हमारा 1 एकड़ के आसपास का है, उसमें आवाज़ सुनाई दे रही? हेलो? आवाज़ आ जी रही? जी सर, आपकी आवाज आ रही जी। है। हाँ, जो हमारा बड़ा 1 एकड़ का कांसेप्ट है, उसमें 451 पौधे लगाए जाते हैं, और वो पौधे सभी 3 स्तर के होते हैं। पहले मैं उसकी मॉडलिंग का पूरा ब्यौरा आपके सामने रख रहा हूँ कि उसमें 1 एकड़ के एरिया में 11 बेड होती हैं, और उन बेड की, प्रत्येक बेड की जो लंबाई है वो 205 फीट रखी गई है, और एक दूसरी बेड का जो डिस्टेंस है वो 13 फीट के आसपास है। बीच में समतलीकरण जो है उसका मैं बाद में ब्यौरा दूँगा। बेड की ऊँचाई 16 से 18 इंच हमने रखी है, और उसकी जो चौड़ाई है बेड की, वो 6 फीट है, 6 से 6.5 फीट। उस बेड पे हमने पौधे एक पूरा एक अल्टरनेट तरीके से लगाए हैं, यानी कि कहाँ किस पौधे की ज़रूरत है। तो हमने 451 पौधे से एक 244 पौधे ऐसे लगाए हैं, जिनका पूरी तरह से उस बेड पे जगह का यूज़ किया है। यानी वो जगह का हम पूरी तरह से यूज़ करें, तो उसमें मैं संख्या बता दूँ कि जो 244 पौधे हैं, उनमें 131 गन्ने हैं। उनमें 51 केला है, और केला भी विशेष हमारी G9 वैरायटी का है, जो अच्छी वैरायटी कहलाती है। और 36 उसमें हमारे पपीता है, 1 एकड़ का जो कांसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, वो 26 बहुवार्षिक अरहर है। हमारी जो अरहर है वो बहुत ही अच्छी है, और हमारे एक ऐसे किसान से मुझे प्राप्त हुई कि उनने कहा कि 70-80 साल से तो हमारे दादा-दादी इसको उगा रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत हमें देसी अरहर मिली, और उसमें अभी मैंने पिछले बार, अभी 15 दिन पहले, उससे अरहर से दाने जो उसमें आए, प्रथम वर्ष में तो कम आए, और उसमें जो फल्ली थी वो 5 और 6 दाने की फल्ली थी। तो ये 4 मैंने प्रथम पौधे जो गिनाए हैं, ये पौधे हमें 4 से 5 साल तक वहाँ आमद देते हैं। हालाँकि 131 गन्ना है, तो हम इनको घटा-बढ़ा सकते हैं। यानी 131 हम केला लगा सकते हैं, या 131 हम पपीता लगा सकते हैं, लेकिन रहेंगे 244 पौधे ही। अब हम आगे आते हैं, 130 पौधे हमने ऐसे लगाए हैं, जो मैंने 244 गिनाए हैं, जो 4 से 5 साल चलने वाले हैं। अब 130 पौधे हमने ऐसे लगाए हैं, जिसमें 80 सीताफल है, 20 अमरूद है, रेड डायमंड का भी है, ऐश्वर्या का भी है, और अब्दुल्ला ग्रेड का भी है। अब 80 सीताफल, 20 अमरूद, और 10 अनार, 10 मौसम्बी, 10 संतरा, ये 130 पौधे होते हैं। लेकिन इनको हम क्या है, इनको घटा-बढ़ा भी सकते हैं।
जैसे 80 हमने सीताफल लगाए हैं। सीताफल NMK1 का गोल्डन सुपर सीताफल है। तो हम सीताफल को 20 कर सकते हैं, अमरूद को 80 कर सकते हैं। ये हमारा 130 पौधे। इनकी मैं लास्ट में सभी पौधों की आमद भी निकाल के बताऊंगा। तो 130 पौधे ये हमारे हैं। और जैसे कि इनके बाद हमने कुछ पौधे, जो मैंने अभी 4 वैरायटी के पौधे गिनाए हैं, ये 20 से 25 साल चलने वाले पौधे हैं। और हमारे पालेकर गुरुजी की पद्धति में तो बहुत ही और भी ज्यादा आयु लेते हैं, मिठास आती है, अधिक फल आते हैं। लेकिन इसके बाद में और 41 पौधे और बतला रहा हूँ। 41 पौधों में आवाज आ रही है? Yes, sir. आवाज जी। 41 पौधे मैं ऐसे गिनाने जा रहा हूँ आपको, जैसे अभी मैंने 244 पौधे गिनाए, जो 451 का मैं पूरा एक्यूरेट आपको पौधे गिनाऊंगा 1 एकड़ का। पहले जो हमारे अल्पायु वाले 244 गिनाए, उसके बाद 130 गिनाए। अब मैं 41 पौधे गिना रहा हूँ इन्हीं के समकक्ष। इसमें क्या है, इसमें डार्फ के नारियल है 15, जो कि हमें ठेले पे पीने को मिलते हैं पानी, 40-50 रुपए में जो हम पानी पीते हैं। और कहते हैं कि 1 लीटर पानी तो 10 लीटर पूर्ति करता है हमारे शरीर में। और बहुत सारे, यानी लाखों करोड़ों की तादाद में उसमें मिनरल्स रहते हैं। तो डार्फ का नारियल 3 से 4 साल में हमें नारियल लगना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं ये क्योंकि 1.5 साल से लगाए हैं, तो अभी हमने नारियल लगे नहीं है हमारे। तो 15 इसमें हमारे डार्फ वैरायटी के नारियल हैं। और इसमें 12 हमारे नींबू हैं, और 12 मासी वाले, जो कि हमारा देसी होता है। 12 इसमें नींबू हैं, 8 हमारे चीकू हैं। चीकू पे भी हमने एक अच्छी वैरायटी का चयन किया है। जैसे चीकू में क्रिकेट वाल का भी एक चीकू होता है, जो गोल ज्यादा मार्केट में आता है, और एक काली पत्ती वाला चीकू होता है। तो हमने चीकू थाई को चयन किया है, क्योंकि चीकू थाई हमारा 20 साल पहले से एक पौधा हमारे घर लगा हुआ है। तो उसका हमने इसमें 8 चीकू का चयन किया है। और ऐसे हमारे कुछ पौधे, जैसे 15 नारियल, 12 वो हो गए आपके। इसमें हमने 2 आम लिए हैं। वो आम है कट्टेमन वैरायटी के, जो कि 12 महीने लगते हैं, और ज्यादा बड़ा पौधा नहीं होता है, ताकि हम तब चाहें उसकी चटनी बना लें, तब चाहें उसका हम दाल में डाल दें। तो ये इसमें 2 पौधे वो लिए हैं, और 2 हमने लिए हैं आंवला के पौधे, और 2 पौधे लिए हैं हमने नाशपाती के। तो ऐसे करके ये 41 पौधे होते हैं। लेकिन मैं इनका भी जो आमद है, क्योंकि आमद तो अभी हमें मिलना स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमने 1-1.5 साल से ये चीज़ की है। लेकिन हमने एवरेज इनका निकाला है कि हमें ये पौधा एक आयु के बाद, एक समय के बाद इतनी आमद देगा। तो 41 पौधे हमने ये लिए हैं, और ट्रायल के तौर पे कुछ 10-11 पौधे और लिए हैं। और विशेष अभी में जो मुख्य, जो 100 साल चलने वाले पौधे हैं, उसका मैं लास्ट में बतलाऊंगा। 11 पौधे हमने ट्रायल के तौर पे कैसे लिए हैं। एक ड्रैगन फ्रूट ले लिया है, एक स्टार फ्रूट ले लिया है, और मोरंगा ले लिया है। मोरंगा तो जनरली सभी बहुत अच्छे से होता ही है, तो ये ट्रायल में नहीं आता। तो 4 मोरंगा ले लिए, एक स्टार फ्रूट, एक ड्रैगन फ्रूट, एक हमने आपका ये वो अ, बादाम, वो काजू, काजू ले लिया है। ऐसे करके ये 11 पौधे हैं। तो ताकि हमारा क्लाइमेट इसके अनुकूल है कि नहीं, तो ये ट्रायल के तौर पे ये 11 पौधे ये भी है, स्टार फ्रूट और ड्रैगन फ्रूट। तो इनकी भी मैं आमद बताऊंगा। लेकिन अब विशेष मुख्य बिंदु पे आते हैं कि हमने 1 एकड़ में जो 11 बेड हैं, प्रत्येक बेड पे
41 पौधे लगाए जाते हैं और इस तरह से अल्टरनेट तरीके से लगाए जाते हैं। अब उसमें हमने 20 आम लिए हैं, क्योंकि आम इसलिए हमने लिए हैं और उसमें भी विशेष हमने 12 देसी आम लिए हैं। उसमें 2 हमने चौसा शामिल किए हैं, 2 हमने वो हापुस शामिल किए हैं, 2 हमने आम्रपाली शामिल किए हैं, ताकि ये भी क्रम से हमें आते रहें। तो ऐसे हमने 20 आम इसमें लगाए हैं। उसके बाद हम आते हैं कि 2 जामुन, एक देसी जामुन है और एक है बाहेडोली। बाहेडोली एक अच्छी वैरायटी है, जिसका ज़्यादा फल बड़ा होता है, गुठली छोटी होती है, मिठास अच्छी होती है। 2 जामुन है, इसी में 2 कटहल शामिल किए हैं। एक हमारा देसी कटहल है और एक वियतनामी वैरायटी का कटहल है, जो कि जिसका फल छोटा से छोटा 1.5 किलो का होता है, बड़ा से बड़ा 3 किलो का, इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो 2 हमने कटहल लिए हैं और ये कटहल जो वियतनामी कटहल है, ये 12 महीने इसमें कटहल लगते हैं। तो ये हमने लगाए हैं, लेकिन अभी इनके फल नहीं लिए हैं और जहाँ से हमने लिए हैं उनकी विश्वसनीयता पे ये सब फल हमने लिए हैं और लगाए हैं। अब हम आते हैं इमली, एक इमली का पौधा है। तो इन 25 पौधों को हमने इस तरह से लगाया है कि इनका जो डिस्टेंस हमने रखा है, वो 40 फीट रखा है, एक दूसरे के पौधे की 40 फीट। लेकिन ये बड़े हैं के एक दूसरे के जो 41 पौधे हमारे 205 फीट की बेड पे 41 पौधे जो लगाए जा रहे हैं, वो उनका डिस्टेंस आपस में 5-5 फीट का है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ भी आम लगाया है या कटहल लगाया है या इमली लगाई है। उस जस्ट बगल में हमने या तो पपीता लगाया है, 2 इस साइड बेड पे, या तो 2 पपीता लगाए हैं या 2 केले लगाए हैं या 2 बहुवार्षिक अरहर लगाई है और इस साइड भी 2 लगाए हैं। उसके बाद हमने अमरूद या जो 25 से साल चलने वाले हैं, अमरूद है या सीताफल है या मौसम्बी है या संतरा है, इस तरह से यानी कि 2 पौधों के गैप देके तीसरे क्रम में हमने वो पौधा लगाया है। क्योंकि जो बड़े पौधे हैं, आम है, इमली है, आपका कटहल है, ये जस्ट हमने 2 पौधे इसलिए लगाए हैं कि यदि हम एक ही लगा देते और एक के बाद अमरूद लगा देते या अनार संतरा लगा देते, तो ये पूरा पौधों का शोषण करने लगता है। तो हम 5 साल में उनको इतना स्पेस देंगे कि वो 5 साल में इसको पूरी बड़ी कैनोपी बनाने की पूरी फैसिलिटी मिले। पौधों को हम 5 साल में हटा लेंगे। लेकिन देखिए, पौधे तो हम हटा लेंगे, लेकिन पौधों पे के स्थान पे जो हमने गड्ढे किए हैं, उन गड्ढों में हमें लगाना है देसी जिमीकंद, क्योंकि ये छाया में बहुत अच्छे से हो जाता है। अब हमने जो बेड 6 फीट की बनाई हुई है, उस बेड का मैं क्रम बताता हूँ कि उसमें एक टपक सिंचाई जैसे होती है उस पाइपलाइन को, वो टपक सिंचाई को हमने हाई स्पीड बनाया है। यानी कि उसमें हमने हर पौधे के पास एक टी लगाई है और टी के पास से वाल लगाया है। यानी कि 41 टी है, 41 वॉल हैं और वहां से हम एक ही वॉल खोलेंगे मुख्य पाइप से, तो जो 20 सेंटर में है और 20 सेंटर में से वो पौधों के किनारे से आया है। क्योंकि हमने पौधे क्या है, एक अल्टरनेट तरीके से लगाए हैं, तो किस पौधे को कम पानी चाहिए, किस पौधे को ज्यादा पानी चाहिए और किस पौधे को किस सीजन में बिल्कुल पानी नहीं चाहिए, इसलिए हमने वहां टी लगा के वाल लगा दिया है, ताकि हमें किस पौधे को कितना पानी देना है तो उतना हम बाल खोलते हैं, किस पौधे को नहीं देना है तो उसका बाल हम बंद करते हैं। लेकिन उसके जो टपक सिंचाई है, उसके दोनों पौधों के बीच में हमें जो 5 फीट का डिस्टेंस मिला है, उसमें हमने मक्का लगाई है, 3-3 पौधे लगाए हैं, क्योंकि वो टपक सिंचाई से उन मक्का को पौधों को बूंद-बूंद पानी मिलता रहता है। अब उसी के बाजू में हमने क्या किया है कि बीज बेड पे तो पौधे लगे हैं, मक्का लगी है, हमारी टपक सिंचाई की पाइपलाइन बिछी है। लेकिन हमने आधी बेड जो इधर 3 फीट रहती है, आधी बेड इधर 3 फीट रहती है, उसपे हमने क्या करा है कि उसपे रेन पाइप को उल्टा बिछाया हुआ है।
एक तो रेन पाइप हम सीधी बिछाएंगे तो वो 5-6 फीट इधर और 5-6 फीट इधर जो फुहारे पानी के मारती है। लेकिन हमने क्या है कि उसे उल्टा बिछाया है, तो वो बहुत जल्दी ही दोनों साइड वो भिगो देती है और बीच में रेन पाइप है, तो दोनों साइड क्या है कि एक साइड काबुली चना है और एक साइड मेथी है। दूसरी लाइन में काबुली चना है, तो दूसरी साइड धनिया है। यानी कि 20 सेंटर में हमारी मक्का की लाइन है प्लस हमारे पौधों की लाइन है और 3 फीट जो इधर शेष है उसमें काबुली चना है या हमारा मेथी है या इस साइड काबुली चना है तो प्लस धनिया है। तो ऐसे हमने दूसरी बेड पे हमारा गेंदा भी लगा हुआ है और उसके बाद में जो डिस्टेंस आता है 13 फीट का जो प्लेन भूमि है समतलीकरण, क्योंकि बेड का तो ये क्रम हो गया, उसके जो समतलीकरण है उस पे हमने थोड़े थोड़े रूप में सोना मोती गेहूं 3 लाइन और फिर 3 लाइन हमने मेथी, फिर 3 लाइन सोना मोती गेहूं, फिर 3 लाइन मेथी। तो जो 13 फीट के डिस्टेंस को हमने एक पूरी लाइन जो 205 फीट है उसको इस तरह से हमने उसमें अनाज क्रॉप लगाई है। दूसरे में हमने क्या किया है कि दूसरे में खपली गेहूं 3 लाइन, फिर मेथी, फिर खपली, फिर मेथी, फिर खपली, इस तरह से ये लगाया है। अब हम लास्ट में इसका पूरा ब्यौरा जो आमद का है वो देंगे, क्योंकि ये हमारे पालेकर गुरुजी का हमें जो ज्ञान मिला है उसी का मैं आप सभी के सामने व्याख्यान कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने 6 राज्यों में जाके पालेकर गुरुजी के 12 शिविर 5-5 दिन के अटेंड किए हैं और उनकी जो त्याग तपश्चर्या है और जो उनकी एक-एक बिंदु पे एक-एक छोटे-छोटे विषय पे जो रिसर्च है, उनका ज्ञान ही मैं आप सभी अन्नदाताओं को, आप सभी प्रेमी बंधुओं को, उपभोक्ताओं को मैं उस ज्ञान का व्याख्यान कर रहा हूँ। सुभाष पालेकर कृषि। तो आमद बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें मैं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपने यहाँ फ्लेक्स कुछ बनाए हुए हैं। उन फ्लेक्स में हमारे पालेकर गुरुजी का मैंने ज्ञान को थोड़ा-सा वर्णित किया है और उसमें मैं सबसे पहले कहूँगा कि मैंने गुरुजी के आदेश अनुसार जैसे सुभाष पालेकर कृषि, तो मैंने इसे थोड़ा-सा नाम जोड़ दिया स्मार्ट कृषि। स्मार्ट कृषि इसलिए कि ये 100 वर्ष तक हमें आमद देने वाली है। आज का रुपया डॉलर जो भी हो, तो आज के कंपेयर में अगले 100 साल तक हमें उतनी आमद मिलेगी और मैं आमद विधिवत पूरी आमद आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आवाज़ आ रही है जी? हेलो? जी सर जी, आ रही। जी। हाँ, तो उसके बाद में मैं सारी वो आमद को रखूँगा। लेकिन पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी सुभाष पालेकर जी की जो कृषि विधि है, उसमें 8 फ़ायदे भी स्वतः ही हो जाते हैं और वो 8 में मैं विशेष गिनाना चाहूँगा कि जल, जीव, ज़मीन और पर्यावरण 4 हो गए। क्योंकि इनकी सम बैलेंसिंग सुभाष पालेकर कृषि विधि में हमें देखने को मिलती है और पूर्ण विश्वास से ये चारों की बैलेंसिंग इसमें है, जल, जमीन, जीव और पर्यावरण। 5वें पे मैं आता हूँ कि इसमें हमारी जो देसी गाय माता है, इसका प्रत्येक व्यक्ति के प्रति प्रादुर्भाव जुड़ता है। यानी कि इस तरह की कृषि में यानी वो गाय जो आज भगाई जा रही हैं, उनका निरादर कर रहे हैं, उनको कोई समझ नहीं रहे हैं और हमारे किसान भाइयों ने तो फर्स्ट फ्रंट पे दूध को रखा है। अरे! दूध को सेकंड फ्रंट पे रखिए, फर्स्ट फ्रंट पे आप रखिए गोबर और गौमूत्र। तो एक 5वां जो कारण है सुभाष पालेकर कृषि में कि गाय माता के प्रति प्रादुर्भाव और छठा कारण मैं बताता हूँ
कि ये कृषि हमारे रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से जो आज शहरों की ओर पलायन हो रहा है, उसको रोकती है। क्योंकि एक व्यक्ति 1 एकड़ में इस तरह की कृषि करेगा, तो एक परिवार को ज़रूर वहाँ उस माध्यम से रोज़गार मिलेगा। ये 6 चीज़ हो गई और 7वाँ मैं कहना चाहूँगा कि इसमें हमारा स्वास्थ्य जुड़ा है, क्योंकि स्वस्थ जीवन, निरोगा जीवन इसमें जुड़ा है। ये पालेकर कृषि की ये विशेषता है। और आगे मैं इसको कहना चाहूँगा कि इस विधि से जो कांसेप्ट हमने तैयार किया है, जो मॉडल है फूड बागवानी का, इसको 90% हमारी माताएँ-बहनें बहुत आसानी, बहुत सहजता से कर लेती हैं। इसमें पावर वीटर का भी हम इस्तेमाल करें और मैंने जो घर छोटा-सा मॉडल बनाया हुआ है, उसमें तो हमने खरपतवार को ना हो इसलिए वहाँ जो आच्छादन किया है, क्योंकि वहाँ गन्ना लगा है, तो गन्ने के जो पत्ते होते हैं, क्योंकि एक नया पत्ता आता है तो दूसरा पत्ता सूख जाते हैं, तो हम उन पत्तों को निकाल के और उसको थोड़ा-सा कुट्टी करके, थोड़ा बारीक करके और उन्हें यहाँ बिछाया गया है। और बड़े जो हमारे पौधे हैं, उनके जो पत्ते गिरते हैं, उनको भी हमने यहाँ बिछाया हुआ है। क्योंकि उससे क्या है कि हमारा जो देसी केंचुआ है, उसकी इस आच्छादन से विशेष वो बड़े सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे कि कल पालेकर जी ने इस संबंध में हमारे गुरुजी ने बहुत कुछ बता ही दिया होगा। तो मैंने ये पूरा इस तरह से बिछाया हुआ है और उसपे हम जीवामृत डालते हैं। लेकिन कहते हैं कि मैं अभी यहाँ भी एक गेंती मारता हूँ तो समझ लीजिए केचुए की कॉलोनी यानी कि इतने बस गए हैं वो। रक्षादन में तो 2 ही कारण होते हैं कि वो वहाँ पे अपना कार्य बड़े निरंतर से और निडर होके कार्य करते हैं, क्योंकि ऐसे बाहर आते हैं तो पंछी का उन्हें डर लगता है, दूसरा रसायन में तो वो बाहर आते ही नहीं है, ना अपना वो परिवार बढ़ा पाते हैं। तो अब हम आते हैं कि आज आवश्यकता है सभी को, मैं अपनी ओर से 2 लाइन कहना चाहूँगा कि जिस दिन हमारे देश का अन्नदाता माननीय सुभाष पालेकर जी की कृषि में व्यस्त हो जाएगा, जिस दिन मेरे देश का अन्नदाता सुभाष पालेकर कृषि में व्यस्त हो जाएगा, उसी दिन मेरा भारत देश स्वस्थ हो जाएगा। तो आज इसको स्वयं से करना होता है और मैं अब आमद के बारे में इन पौधों की कुछ विशेषताएँ आपको बताता हूँ। पहले मैंने जो गन्ना और आपका पपीता, बहुवार्षिक अरहर और केला जो बताया था, उसकी मैं आपको आमद की डिटेल बताने जा रहा हूँ। उससे हमें फर्स्ट साल यानी प्रथम साल तो नहीं, दूसरे वर्ष में ही हमें इन 451 पौधों से आमद मिलती है डबल। यानी कि हम जो परंपरागत कृषि कर रहे हैं, उससे हमें डबल आमद मिलती है। 3 और 4 साल के बाद हमारी वो 1 एकड़ का मैं रेशो बता रहा हूँ, वो आमद 1 एकड़ में बढ़कर हो जाती है 4 से 5 गुना। और उसी आमद को हम आगे ले जाएँ, क्योंकि 4 और 5 साल के बाद कुछ पौधे ऐसे हैं कि हमें, जैसे सीताफल है, अमरूद है, अनार है, ये इस तरह से हमें आमद देना, फल देना स्टार्ट कर देते हैं। फिर 11 और 12 साल के बाद जो बड़े पौधे हैं, वो हमें फल के रूप में आमद देंगे, तो हमारी आमद हो जाती है 12 से 14 गुना, जो कि निरंतर हमें 100 वर्ष तक मिलने वाली होती है, बगैर खर्च, बगैर लागत के। तो मैं इन 4 वैरायटी के पौधों की जो 244 पौधे हैं,
उनकी मैं आमद आपको बताने जा रहा हूँ 1,01,100 रुपए। कौन से पौधे? यानी कि पपीता, बहुवार्षिक अरहर और केला और गन्ना। अब दूसरे क्रम में हम आते हैं, जैसे अभी 80 सीताफल हमने बतलाए थे, 20 अमरूद बतलाए थे, इन्हें हम घटा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमने एक पौधे का रेशो 800 रुपए निकाला है, तो हमें 130 पौधे जो अनार, अमरूद, मौसम्बी, संतरा और सीताफल, इन 5 प्रकार के जो पौधे हैं, इनसे हमें आमद मिलती है 1,04,000 रुपए प्रति वर्ष। और फिर मैंने नारियल, नींबू और चीकू और कट्टेमन वैरायटी का आंवला, इनका हमने पूरा रेशो निकाला है। इन पौधों से हमें आमद मिलती है 65,900 रुपए। और फिर जो हमने ट्रायल के तौर पे 10-11 पौधे जो छोटे-छोटे बताए थे, उन पौधों से हमें आमद मिलती है 7,000 रुपए के आसपास। क्योंकि ये हमने बहुत इसमें से बहुत कम आमद निकाली है। अब हम मुख्य बिंदु पे आते हैं, जो कि हमें 10 और 12 साल के बाद निरंतर जो हमें आमद स्टार्ट होगी, वो है हमारे देसी आम, जामुन, कटहल, इमली। तो हमने एक पौधे से, एक पौधा यदि हमारा आम का एक मैच्योर होने पे 3 कुंटल कैरियाँ उसमें लगती है और हमारी 50 रुपए किलो कैरी बिकती है, तो हमारा एक पौधा 15,000 रुपए देता है। और ऐसे करके हमने इन 25 पौधों से, यानी 20 तो आम ही है, 20 आम से हमें 3 लाख रुपए की आमद मिलेगी। तो हमने 3,38,000 25 पौधों के, उसमें कटहल, जामुन और इमली, तो 3,38,000 हमने इनके निकाले हैं। और ये सभी इसके बाद में, क्योंकि पंचस्तरीय फूड बागवानी जो है जंगल मॉडल है, तो ये हमारे गुरुजी सुभाष पालेकर जी का, तो इसमें क्या है कि अभी हमने 3 के तो गिना दिए, यानी तीनों प्रकार के, तीनों स्तर के पौधों के हमने आमद गिना दी। लेकिन उसमें देखिए कि अभी हम इसमें दोनों अनाज क्रॉप लेंगे, रबी एवं खरीफ में जो क्रॉप लेंगे, उसका खर्च निकाल के वहाँ पे हमें अनाज प्लस या तो हम सोयाबीन लगाएँ या मूँगफली लगाएँ, क्योंकि हमने तो अभी मूँगफली लगाई थी और वो मूँगफली गुजरात की थी बड़ी वाली। हम इसमें से खर्च निकाल के, खर्च तो ज्यादा आता नहीं है, इसमें से हमें 45 से 50,000 एवरेज एक साल में 1 एकड़ एरिया में हमें ये आमद मिलती है। और दूसरा, इसमें सब्जियां लगाई जाती है, क्योंकि इसमें जो बाउंड्री पे जो जाली है, उन जालियों पे बहुत अच्छे से कंद वर्गीय, बेल वर्गीय, भू वर्गीय, इन पे सब्जी बेड पे प्लस जालियों के किनार में बेल वर्गीय, ये बहुत अच्छे से ये सब्जी होती है। तो इसका हमने एवरेज निकाला है, इसका एवरेज आता है 90,000 से 1 लाख के आसपास। तो ये हमारा टोटल पंच स्तरीय बागवानी का 1 एकड़ के आसपास का, ये हमें आमद मिलती है 11 और 12 साल के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगी, 100 साल तक ये मिलेगी। हमने अभी इसका पूरा टोटल वो किया है, तो इसमें 7,51,600 रुपए ये टोटल आता है, क्योंकि हर चीज के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इसका एक और मैं आपको विधि बतलाता हूँ कि इसमें थोड़ा सा साल में एक बार तो हमें इसमें जो पालेकर गुरुजी की विधि है घन जीवामृत, कम से कम 1 टन तो डालना होगा, यानी कि 10 कुंटल। और प्लस प्रति महीने हमें 2,000 लीटर से लेके 2,500 लीटर तक हमें इसमें पानी के साथ बहा के, या हमें हजारे से, या हमें स्प्रे के साथ, हमें प्रति महीने 2,000 लीटर से 2,500 लीटर
प्रति महीने हमें इसमें जीवामृत भी डालना होगा। हम इन दोनों का आकलन करें, क्योंकि 2500 लीटर हम जीवामृत इसमें डालेंगे या घन जीवामृत हम थोक में साल में एक बार 1 टन यानी 10 कुंटल डाल रहे हैं, तो ये हमारा करीबन 2 टन यानी 20 कुंटल के आसपास वहाँ गाय का गोबर, क्योंकि 50% जीवामृत में तो नहीं चलता है, देसी गाय का ही वो चलता है। घन जीवामृत में ज़रूर हम बैल, भैंस या इसका उसका 50% ले सकते हैं। 50% गुरुजी बताते हैं कि देसी गाय का अनिवार्य है। तो ये हम डालेंगे और मैं तो ये, क्योंकि जो भी मैं इतनी देर से सब बोल रहा हूँ, ये मैं गुरुजी की ज्ञान का यहाँ उपमा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें 12 शिविरों में बहुत गहनता से, गहराई से सुना है। अभी परसों के रोज मैं दूरदर्शन केंद्र मध्य प्रदेश के लिए हमारा आधा घंटे के लिए कार्यक्रम था, तो वहाँ भी मैं गया। तो आगे इसको हम बढ़ाते हैं इस विषय को कि आपको बहुत ही एक गाय मान लें 1 एकड़ में। वैसे तो गुरुजी तो कहते हैं कि एक गाय 10 एकड़ से भी अधिक के लिए पर्याप्त है। लेकिन मैंने थोड़ा-सा 15 साल में ये अनुभव किया कि एक एक गाय तो हमारी देसी होना चाहिए, और इसमें देसी गाय का जो गोबर है वो तो एक अद्भुत है, चमत्कारिक है, और जीवामृत इसमें बहुत ही चमत्कारिक है। तो आवाज़ सुनाई दे रही है? जी, जी सर। जी। जी। तो ये है कि अभी तक का मैंने जो अपना प्रेज़ेंटेशन आपके सामने रखा है। इसमें कुछ ऐसे संदेह पूर्वक सवाल-जवाब कुछ हों, तो बिल्कुल कोई पूछ सकते हैं। जी सर। पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो सर से आप पूछ सकते हैं। हेलो? जी सर, जी सर। Participants, हेलो? wait, I'll unmute you. हेलो? जी सर, लगता है जी, पार्टिसिपेंट्स को आज कोई क्वेश्चंस नहीं है सर। जी। तो इसके लिए ये है कि या तो कहीं मॉडल इस तरह से बनाया जाए, या फिर हमारा मॉडल आके देखें, क्योंकि ये जो कृषि है हमारा भविष्य है। इसमें कहते हैं कि बोल सकते हैं 5-10 मिनट? जी सर, बिल्कुल। जी, हाँ। ये कृषि वो है कि आंधी तूफान या अप्राकृतिक आपदाओं में हमारा 90% हमारी फसल सेफ रहती है सुभाष पालेकर कृषि की विधि में। और आगे मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह की कृषि ऊबड़-खाबड़ भूमि पे यानी कि मुरम मिट्टी अनावश्यक भूमि पे भी इस तरह की कृषि बहुत ही सक्सेसफुल है। क्योंकि मैंने गुरुजी के साथ में गुजरात में और महाराष्ट्र में और यूपी में कुछ किसानों के विजिट किए हैं, और जो कि अनार की खेती
पहाड़ पे बहुत अच्छे से ले रहे हैं, बहुत अच्छी आमद ले रहे हैं। और ये मैंने प्रत्यक्ष सुना है कि 7 से 8 लाख रुपए बहुत ही सहजता से 1 एकड़ कृषि भूमि में वो ले रहे हैं। हालाँकि ऐसा है कि 2-3 साल तो हमें कई प्रकार के परिश्रम, परेशानियाँ उठानी पड़ती है और किसी भी चीज़ को सेटअप जमाने में समय तो लगता है। और ये वो कृषि है कि हमारी भूमि को जो बरसाती पानी का जो अवशोषित क्षमता है, वो 90% तो ये बढ़ाती है। और दूसरा इसमें मैं इसमें एक चीज़ दूसरा मैं इसमें एक चीज़ हेलो। Yes, बोलिए। हाँ, दूसरा मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जो भी हम इसमें बहुत ही संलग्नता से, शालीनता से इसमें कार्य करेंगे, तो प्रथम ये हमारी आमद बढ़ाती है, दूसरा हमारा आनंद बढ़ाती है, तीसरी हमें आयु बढ़ाती है और चौथी हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता से अधिक हमें यहाँ ऑक्सीजन मिलती है। यानी 4 आ से मैंने अभी ये चीज़ को दिखाया है। दूसरा देखिए कि इसमें सॉइल यानी कि सुगंधित भूमि, माटी, सॉइल 7 से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। सॉइल स्वस्थ है तो श्वास स्वस्थ है और श्वास स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है और शरीर स्वस्थ है तो आपको समय है और समय है तो आपके अंदर सेवा का भाव है, सेवा है और सेवा ही सम्मान है और सम्मान के उपरांत ही आपको सुफल है, यानी जो फल खाने को मिलेगा सुफल है। यानी कि 7 चीज़ों को मैंने 7 से आपके सामने इसका विश्लेषण किया। तो एक दिन इस तरह की कृषि करेंगे तो प्रथम तो यही है कि आपको सुगंध मिलेगी, स्वाद मिलेगा, प्रतिरोधक शक्ति आपकी स्वयं की बढ़ेगी और आपको एक अच्छा भाव मिलेगा और आपकी अच्छी एक आमद होगी। क्योंकि कहते हैं कि आज किसान की इनकम बढ़ेगी, किसान की इनकम बढ़ेगी तो हमारे भारत देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। और इस तरह की कृषि का मैं सभी से आग्रह करता हूँ क्योंकि मैं अनेक-अनेक जिले, अनेक-अनेक गाँव में ये पालेकर गुरुजी की कृषि का जो मॉडल है, कांसेप्ट है, वो मैं लेके जाता हूँ और एक-एक घंटे सभी किसानों को उस फ्लेक्स के माध्यम से मैं सबको बताता हूँ और और बहुत सारे हमारे देश में किसान इस तरह की कृषि करना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें फसल भी है, सब्जी भी है, फूड भी है और समय भी है, आनंद भी है और आमद भी है। तो मैं अब सभी से प्रार्थना करते हुए मेरे इस को आपने जो मेरे अनुभव को सुना, जो मैंने पालेकर गुरुजी के अनुभव को आपके सामने शेयर किया, तो आप सभी को मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धन्यवाद सर। जी। So thank you very much, sir, for sharing your valuable field experience. Your session clearly demonstrated how natural farming principles can be effectively practiced on the ground and how models like 5-layer food forest can support sustainable and self-resilient agriculture. Before we conclude today's program, we now invite Mr. Vinod Ramesh Bharti, Assistant Professor, Department of Agronomy, G.H. Rai Soni University, Chindwara, to propose the vote of thanks. Sir, I request you to address the gathering. जी, एड्रेस? Sir, thank you, sir. आपका सेशन हो गया, sir. जी, जी। Thank you, sir. Hello, I'm audible? Yes, sir.
Hello, Hello. I'm audible. Yes, sir, you are. Actually, before going to the vote of thanks, I want to say something with this good platform, wonderful platform, because eminent personalities over here. So I'm telling some message which the title is there. So reviving soil, sustaining life, and securing the futures. So reviving soil means the soil is the foundation of our life. So everyone knows about that. So what is the foundation? और कुछ लोगों को जो यहाँ पे किसान साथी जो है उनके लिए भी मैं थोड़ा हिंदी में भी कन्वर्ट करके आपको बताना चाहता हूँ कि फाउंडेशन क्या है। जिस तरह से हम घर की नींव रखते हैं उस तरह से ही सॉइल हमारा एक खेती किसानी की एक नींव होता है। और अगर हम सॉइल को हेल्दी रख सकते हैं, सो इफ द सॉइल इज हेल्दी देन वी कैन गेट आवर क्रॉप न्यूट्रिशियस। तो हमको न्यूट्रिशियस क्रॉप मिलेगी, देन प्रॉस्पेरिटी फार्मर्स को आएगी। सो दैट प्रॉस्पेरिटी कम्स टू द फार्मर्स एंड इकोसिस्टम रिमेन्स बैलेंस। तो ये परिस्थिति की जो है बैलेंस रहेगी। एंड आफ्टर दैट रिवाइविंग द सॉइल थ्रू द नेचुरल एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस दैट रिस्टोर्स द सॉइल बायोलॉजी। तो इस वजह से जो हमारी जीविका जो है वो काफी अच्छी तरह से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो पानी की जल धारण क्षमता है, वो हम उसको बना के रख सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। और जो केमिकल पे जो किसान जो साथी लोग ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंस रहते हैं वो उसको हम कम कम कर सकते हैं। और इसी तरह से बाय प्रोटेक्टिंग द सॉइल टुडे, सो वी कैन सिक्योर आवर प्रेजेंट लाइफ। तो अगर हम सॉइल के बारे में सोचते हैं तो हमारा प्रेजेंट जो है हम उसको सस्टेन कर सकते हैं और जो उसको सिक्योर कर सकते हैं। और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हम फूड, एनवायरनमेंट और जो लाइवलीहुड जो हमारे उपजीविका है या एनवायरनमेंट है उसके लिए उसको भी हम सिक्योर कर सकते हैं। बट केयरिंग ऑफ सॉइल इज नॉट जस्ट एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स की या एग्रीकल्चर कृषि विभाग की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। ये एक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी एंड नेचर्स। तो जो ह्यूमैनिटी है हमारी जो हर व्यक्ति की और उस प्रकृति के लिए जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम किस तरह से उसको अच्छी तरह से रख सके और हमारे फ्यूचर के लिए उसको कैसे हम उसको मेंटेन कर सके। इन अलाइन ऑफ दिस नाउ आई एम गोइंग टू vote of thanks. It is my I gives immense pleasure and honor to propose my vote of thanks for enriching of this 2 days webinar that Krishi reviving soil and sustaining life securing futures. So first and foremost, I express my heartfelt gratitude to the eminent Padma Shri awardee, Dr. Subhash Palekar ji. So whose inspiring presence and visionary thoughts on this first day that enlighten us on the soil health, the soil biology, then eco-friendly crop production practices, sustainable and climate resilient agriculture. His lifelong contributions and natural farming continues to guide farmers, researchers, and students across the nations. So on the second day, we were privileged to have an Professor R. Raman, Director CNFSA, at Annamalai University, Tamil Nadu, who shared valuable scientific insights on natural farming, strengthening the academic and research perspective of the webinar. And I also sincerely thanks to Ashok Minaji, who shared his 16 years of practical experience with Subhash Palekar ji, 5 years agriculture food forest models, which was truly motivating and practical. So, and I extend my sincere thanks to Dr. Dhirendra Khare, DFA, Dean Faculty of Agriculture, Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Jabalpur, for granting permissions and providing continued support for organizing this webinar. I am equally grateful to the Dr. Ghansham Deshmukh, Dean College of Agriculture, Balaghat, and for this active involvement and encouragement throughout this program. And I would like to specially acknowledge Dr. Pooja Goswami, Assistant Professor, College of Agriculture, Balaghat, the key driving force behind this webinar. Despite her engagement in 20 days ICR training programs, her dedication, planning, and leadership
ensures the successful execution of this event for the every aspects. And my sincere thanks to Mr. Sivendra Rathod, CEO and founder of EcoFast Agri Solutions, for his valuable supports and efforts. And I appreciates Ms. Diptiraj and Rajeshwari Singh for hosting program so wonderfully and maintaining excellent coordination throughout this session. So I extend my gratitude to each and every individuals from the Department of Agronomy College of Agriculture, Balaghat, JNQ Jabalpur, and Eco Fast Agri Solutions, who contribute directly or indirectly to the success of this webinar. And last, not the least, these programs would not have been successful without the enthusiastic participation of the esteemed audience. Thank you all for joining us and making this webinar meaningful. And thank you for all. I sincerely hope that knowledge gained from this program will help in the protecting nature, improving health, and securing the sustainable future for coming generations. Thank you very much for inviting me for a vote of thanks. Thank you once again. Now over to Rajeshwari Singh. Thank you so much, Bharti sir. Actually, I would like to say something. There are some questions drop in the message box. Okay, then please ask to Dr. Padma Shri Subhash Palekar ji. That's why the participants are asking more and more question about the Subhash Palekar Krishi. So before closing our webinar, so please, Dipti, carry on. और उसको पता है कि कौन है पीछे Take the questions. Participants, you can drop your questions. Okay, participants, you can directly ask question to Palekar sir. He has already provided his contact details. So with this, we come to the conclusion of day 2 and the 2 days national webinar on Krishi, reviving soil, sustainable life and securing the future. Once again, we express our sincere gratitude to our esteemed speaker, Professor Dr. R. Raman and Shri Ashok Meena, for sharing their valuable knowledge, research insight, and practical experiences with us. I also thank the organizing institution, Raja Bhoj College of Agriculture, Balaghat, JNKVV Jabalpur, and EcoFast Agri Solution, along with all the participants for their active involvement and support. We hope all the deliberations over these 2 days inspire meaningful function towards sustainable and natural farming practices. Thank you all for joining us. Awesome. Whatever would you like to add something? I think some of the messages are in drop box. Please check it, Dipti. Yes, ma'am. Participants, you can unmute yourself and directly ask the questions. That is in your group.
Actually, sir is with us, so that I think we should all the participants get the answer of any question. I mean to say. Pranam, sir. You can ask your question, please. Hello. Yes, Sanjeev, you may proceed with the question. Sanjeev Kumar, you have some queries, you can clear them up. I think it's pretty much clear that no one is having any doubt. So now we are ending the meeting. You may leave now. Thank you for joining today. Have a wonderful evening. Hello. Hello. Yes, sir, you are audible. Actually, Dipti, please share the Palekar's number in the chat box because whenever the participants or farmers are facing problem regarding the natural farming, then they will directly contact to Dr. Subhash Palekar, sir. Okay, if no one has any question, then close the webinar. And I would like to say thank you on behalf of all the participants to all the eminent resource person, especially Padma Shri Dr. Subhash Palekar ji, Ashok Meena sir, Raman sir. We are fortunate to hear you, sir, and definitely we will plan such kind of national webinar or maybe international webinar on Subhash Palekar Krishi. Definitely we will plan, sir, such kind of national webinar on natural farming Subhash Palekar Krishi.